अस्सलामुअलैकुम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि आखिर ये बिखरा हुआ बेतरतीब सा डेटा कैसे एकदम कारआमद मालूमात में बदल जाता है और हमारी ज़िंदगी को कितना आसान बना देता है। और हाँ, हम इस पूरे प्रोसेस के पीछे छुपे कंप्यूटर की स्पीड और उसके दिमाग के राजों से भी पर्दा उठाएंगे। तो चलिए, बिल्कुल भी वक्त ज़ाया किए बगैर सीधा टॉपिक के अंदर डाइव करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो ज़हन में आता है ना, वो ये है कि ये बिखरा हुआ रॉ डेटा आखिर कारआमद इन्फॉर्मेशन में बदलता कैसे है। मतलब आज के दौर को ही देख लें, बाहर के मौसम से लेकर हमारी स्मार्ट वॉच पर दिल की धड़कन तक हर तरफ डेटा का एक समंदर बह रहा है। इस बेपनाह उलझन और शोर से लेकर एक बिल्कुल साफ और वाज़ेह नतीजे तक पहुंचने का ये जो सफ़र है, ये मॉडर्न कंप्यूटिंग का एक कमाल का जादू है। तो आज हम जिन 4 मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो ये हैं। पहले हम डेटा और इन्फॉर्मेशन को समझेंगे, फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स देखेंगे, उसके बाद सीपीयू की वर्किंग आएगी और आखिर में बात होगी कंप्यूटर की स्पीड और कोर्स पर। चले पहले हिस्से से आगाज करते हैं, यानी डेटा और इन्फॉर्मेशन की बेसिक समझ। जाहिर है, कोई भी बड़ी इमारत खड़ी करने से पहले इसकी बुनियाद और खाममाल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं खाम यानी रॉ डेटा की। ये बिल्कुल बिखरे हुए हकायक, नंबर्स और नाम होते हैं, जैसे 32 डिग्री, 35 डिग्री या फिर अली, सारा, 10, 20। बज़ाहिर इनको देखकर कुछ समझ नहीं आता। ये बिल्कुल एक नामुकम्मल शोर की तरह लगते हैं। इन नंबर्स या नामों की अपनी कोई ख़ास अहमियत तब तक नहीं बनती जब तक हम उन्हें किसी ख़ास पस मंज़र में ना देखें। समझ लें कि ये वो कच्ची ईंटें हैं जिनसे अभी पूरी इमारत बनना बाकी है। अब ज़रा इस खाम डेटा और मुफीद मालूमात का फ़र्क देखें। इन बिखरे हुए रैंडम टेम्परेचर्स और एक बाकायदा कैलकुलेट किए गए औसत यानी एवरेज दर्जा हरारत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन्फॉर्मेशन दरअसल वही डेटा होता है जिसे हमने तरतीब देकर मुनज़्ज़म कर दिया होता है ताकि हम बेहतर फैसले कर सकें। जब हम इस बेतरतीब डेटा को प्रोसेस करते हैं ना, तो वो सारा शोर एक बिल्कुल क्लियर सिग्नल में बदल जाता है जो हमें एग्जैक्टली बताता है कि असल में हो क्या रहा है। इस बात को हम एक पज़ल की मिसाल से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। पज़ल का एक अकेला टुकड़ा बस एक छोटी सी हकीकत है जो अकेला बिल्कुल बेमानी सा लगता है, लेकिन ज़रा सोचें, जब इन तमाम बिखरे हुए टुकड़ों को एक ख़ास तरतीब से आपस में जोड़ दिया जाए तो हमारे सामने एक मुकम्मल और शानदार तस्वीर बन जाती है, बिल्कुल बामानी इन्फॉर्मेशन की तरह। और सच पूछें तो यही वो पॉइंट है जहां ये बिखरे हकायक अपनी असली ताकत दिखाते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के मराहिल। यहाँ हम उन एग्जैक्ट स्टेप्स को देखेंगे जो इन बिखरे हुए पजल के टुकड़ों को एक मास्टरपीस में बदल देते हैं। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के इस लाइफ साइकिल में टोटल 5 बुनियादी स्टेप्स आते हैं: कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रोसेस करना, प्रेजेंट करना और फिर इंटरप्रेट यानी नतीजा अखज़ करना। और ये सिर्फ चंद मामूली कदम नहीं हैं, ये वो लाइफलाइन है जिस पर एक आम से कैलकुलेटर से लेकर जदीद तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर टेक्नोलॉजी काम कर रही है। सबसे पहला मरहला है कलेक्टिंग, यानी मुख्तलिफ ज़राए से डेटा को इकट्ठा करना। आजकल तो ये काम इतने वसी पैमाने पर हो रहा है कि मत पूछें। हमारे फ़ोन्स, सैटेलाइट्स और इंटरनेट डिवाइसेस हर सेकंड पसे मंज़र में खामोशी से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप मुख्तलिफ शहरों का रैंडम दर्जा हरारत चेक करने के लिए मुख्तलिफ सेंसर्स का इस्तेमाल कर रहे हों। उसके बाद बारी आती है दूसरे मरहले की, यानी ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ हम इस सारी अफरा तफरी को एक तरतीब देते हैं। जब बिखरे हुए टेम्परेचर्स को एक साफ सुथरी कैटेगरीज वाली टेबल में रखा जाता है ना, तो पैटर्न्स खुद ब खुद सामने आना शुरू हो जाते हैं। डाटा को इस तरह रोज और कॉलम्स में सजाने से सारी उलझन खत्म हो जाती है और अगले स्टेप्स के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। फिर आता है तीसरा और बहुत अहम मरहला, डेटा की प्रोसेसिंग। असल जादू तो यही होता है। औसत निकालना हो या सबसे ज़्यादा और कम दर्जा हरारत ढूंढना हो, ये सब इसी का हिस्सा है। अब चंद शहरों का औसत निकालना तो शायद हम खुद भी कर लें, लेकिन जब बात लाखों शहरों के डेटा की हो तो इंसान के लिए तकरीबन नामुमकिन है। और यहीं पर एंट्री होती है कंप्यूटर्स की, जो पलक झपकते ही इस सारे पेचीदा हिसाब किताब को मुकम्मल कर देते हैं। चौथा मरहला है रिप्रेजेंटेशन, यानी इसे पेश करना, जो अनप्रोसेस्ड नंबर्स को एक ज़बरदस्त से बसरी बार चार्ट में बदल देता है। अब हमारा दिमाग नंबर के मुकाबले में तस्वीरों और ग्राफिक्स को बहुत जल्दी कैच करता है, तो जब आदाद व शुमार को इस तरह ग्राफिक्स या चार्ट की शक्ल में दिखाया जाता है तो मुख्तलिफ शहरों का मुआवजा करना एक सेकंड में समझ आ जाता है। और फिर इस साइकिल का फाइनल स्टेप आता है नतीजा अखज़ करना या इंटरप्रिटेशन।
देखें, जब तक हम कोई फैसला ना कर सकें, कोई भी डेटा बेकार है। यही वो पॉइंट है जहां टेक्नोलॉजी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ पर असर डालती है। मिसाल के तौर पे मुल्तान की गर्मी और इस्लामाबाद के ठंडे मौसम का चार्ट देखकर हम बड़ी आसानी से यह फैसला कर सकते हैं कि भाई एहतियाती तदाबीर कहाँ लेनी है और घूमने फिरने के लिए कौन सी जगह बेस्ट है। चलें जी, अब हम अपने तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, CPU और प्रोसेसिंग। अब तक हमने जितना भी काम देखा है उसके पीछे जो ताकतवर इंजन दिन रात चल रहा है ना, अब जरा उस कंप्यूटर के दिमाग की बात करते हैं। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या जिसे हम CPU कहते हैं, असल में पूरे कंप्यूटर का दिमाग होता है। ये एक ही सेकंड में अरबों हिदायत लेता है और उन पर अमल भी करता है। जरा सोचें, अगर ये दिमाग निकाल दिया जाए तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, कोई वेब पेज लोड नहीं होगा, और वो जो हम टेम्परेचर की कैलकुलेशंस कर रहे थे ना, वो सब वहीं का वहीं रुक जाएगा। डेटा का वो पूरा सफ़र जिसकी हम बात कर रहे थे, इसी प्रोसेसर के सर पर चलता है। और अब हम आ गए हैं चौथे और आखिरी हिस्से पर, जहां हम कंप्यूटर की स्पीड और कोर्स को डिकोड करेंगे। आखिर वो क्या चीज़ है जो एक कंप्यूटर के दिमाग को दूसरे के मुकाबले में एकदम फास्ट बना देती है? आइए देखते हैं। कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज होता है ना, इसे गीगाहर्ट्ज कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हर्ट्ज का मतलब है एक सेकंड में मुकम्मल होने वाले चक्कर, और गीगा का मतलब होता है अरबों। तो जब हम गीगाहर्ट्ज की बात करते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि प्रोसेसर एक सेकंड में कितने अरब बार हिदायत पूरी कर सकता है। जितना बड़ा नंबर होगा उसका सीधा सा मतलब है कि काम उतनी ही जल्दी और स्मूथ तरीके से होगा। उसे एक गाड़ी की मिसाल से समझना बहुत आसान है। जिस तरह गाड़ी की स्पीड हम किलोमीटर फी घंटा में मापते हैं, बिल्कुल वैसे ही CPU की स्पीड गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। एक कम गीगाहर्ट्ज वाला प्रोसेसर शहर में चलने वाली एक नॉर्मल सी गाड़ी की तरह है, जो रोजमर्रा के काम तो निकाल लेती है, लेकिन जब बात भारी भरकम कामों की आती है तो फिर एक हाई गीगाहर्ट्ज वाला प्रोसेसर एक स्पोर्ट्स कार की तरह आपको मिनटों में मंजिल पर पहुंचा देता है। जाहिर है, एक 3.5 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर 2.0 वाले से बहुत ज्यादा तेज होगा, लेकिन रुकें, यहां एक और चीज भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोसेसर गाड़ी का इंजन है तो रैम वो सड़क है जिस पर यह गाड़ी चलती है। अब इंजन जितना मर्जी तेज हो, अगर सड़क तंग होगी तो गाड़ी पूरी स्पीड से नहीं चल पाएगी ना। बिल्कुल इसी तरह बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए तेज प्रोसेसर के साथ साथ एक खुली और फास्ट रैम का होना भी बहुत जरूरी है। इसी तरह मल्टी कोर प्रोसेसर्स को आप मजदूरों की एक स्मार्ट टीम की तरह समझ सकते हैं। एक सिंगल कोर प्रोसेसर एक अकेले वर्कर की तरह है, जो बेशक बहुत मेहनती हो, लेकिन एक वक्त में एक ही भारी काम करेगा तो टाइम तो लगेगा। जबकि क्वाड कोर का मतलब है 4 वर्कर्स की एक पूरी टीम जो काम आपस में बांट लेती है। यही वजह है कि आप बेवक्त बड़ी फाइल्स भी डाउनलोड कर लेते हैं, ब्राउजिंग भी कर रहे होते हैं, और साथ में हाई ग्राफिक्स गेम्स भी चल रही होती है, और वो भी बिल्कुल स्मूथ। चलें जी, जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स माइंड में फिक्स हो जाएं। हमने देखा कि डेटा सिर्फ खामखाक हैं और इन्फॉर्मेशन उसका बामनी रिजल्ट। इसके 5 स्टेप्स हैं: कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, प्रोसेस, प्रेजेंट और इंटरप्रेट। हमने ये भी जाना कि CPU डिजिटल दुनिया का दिमाग है, गीगाहर्ट्ज उसकी स्पीड बताता है, और मल्टीकोर का मतलब है जबरदस्त किस्म का टीम वर्क। एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचें, अगर ये मल्टीकोर प्रोसेसर्स इतनी ही तेजी से डेटा प्रोसेस कर रहे हैं और रोज बरोज और भी स्मार्ट हो रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में ऐसा मुमकिन है कि कंप्यूटर्स और मशीन्स हमारे अहम फैसले खुद ही करने लग जाएं? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हमारे फ्यूचर को डिफाइन करेगा। उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली बार। खुदा हाफिज। 32 degrees, 40 degrees, random names, isolated numbers. At this stage, these are just raw facts floating in a digital void. This is the starting point: data. On their own, these isolated measurements offer no real utility. You cannot make a meaningful choice or understand a situation if the evidence is scattered and lacks context. But when we establish the relationship between those points, a clear picture emerges. This contextualized view is what we call information. Moving from that initial chaos to this final clarity requires a specific 5-step pipeline. This transformation process is exactly what allows us to navigate a modern world increasingly defined by massive amounts of unorganized facts. Step 1 is collection. We start by gathering raw temperature readings from distinct physical locations across different urban environments. Initially, collected readings exist as messy, isolated data points pulled from Multan, Lahore, Karachi, and Islamabad. Step 2 is organization. Before we can analyze anything, we have to sort this messy scatter into a structured grid. Categorizing these readings by region or date makes the data legible, preparing those specific numbers for computational analysis. This organization is a prerequisite.
Without structural order, the machine has no way to begin its work. Step 3 is processing. Organized data feeds into the CPU. The computer analyzes variables, calculates averages, and identifies Multan as highest and Islamabad as lowest. This processing speed is measured in gigahertz, or GHz, showing how much work occurs in 1 second. Higher GHz allows the processor to resolve data faster. For heavy workloads, modern CPUs use multi-core architecture, like a team dividing a task. A quad-core processor handles multiple data streams simultaneously, rather than processing them one by one. This parallel processing significantly reduces the time it takes to complete complex, data-heavy calculations. The hardware, measured in gigahertz and total cores, is the engine that powers the entire transformation from raw facts to results. Step 4 is representation. The CPU exports its findings into a visual format. Human brains are not optimized to find trends in long textual lists of numbers. We need visual patterns to understand the significance of the data. This bar chart shows the actual visual gap between Multan's heat and Islamabad's lower temperatures, making the comparison instant and obvious. Graphical representation acts as the translation layer between machine-level calculations and human understanding. This thermal map brings us to step 5, interpretation. This is where the machine's role concludes and human judgment begins. Interpretation means looking at these visual patterns to understand the real-world story, such as confirming that Multan is facing a severe heat risk. Understanding that story leads directly to physical actions, like issuing specific heat warnings or adjusting regional logistics. The journey moves from unorganized data through a high-speed processing engine into a clear visual result. This pipeline ensures that the data we collect actually serves a purpose, enabling decisions based on clear evidence rather than guesswork. Hey everyone, and welcome to today's Explainer. We're going to be unpacking a really fascinating process, how raw, totally unstructured data transforms into actionable intelligence. But more importantly, we're going under the hood. We're going to explore the exact hardware architecture, specifically the processing brain of your machine, that actually executes this massive logical undertaking. Okay, let's dive into this. Here is our roadmap for today. First, we'll look at moving from data to information. Second, the CPU, the processing brain. Third, we'll cover GHz, measuring raw speed. And finally, number 4, multi-core, the team effort. All right, starting with section 1, from data to information, making sense of the puzzle. Think of raw data, like random temperatures or just a massive list of names, as scattered puzzle pieces. To actually make them useful, we have to follow 5 distinct steps. First, we collect the raw facts. Then, we organize them into categories and process them to find patterns. After that, we represent that information visually, like turning a gigantic, messy spreadsheet into a nice, clean heat map. And finally, we interpret it. This whole cycle transforms those scattered variables into actual, actionable decisions. For example, identifying a 42-degree peak in Multan so authorities can issue regional weather warnings. But what physically executes that 5-step transformation? Well, that brings us to section 2, the CPU, the processing brain, the engine behind the data. The Central Processing Unit, or CPU, is literally the core architectural brain of your machine. Whenever you command your computer to run complex data analysis, or honestly even just load a web page or run some heavy software, the CPU receives and executes those instructions. Without this central engine actively calculating away, our data just sits there, totally static and unprocessed. Which naturally leads us right into section 3, gigahertz, measuring raw speed. Basically, how fast is your computer? And this brilliantly illustrates the concept. Just as we gauge a car's performance in kilometers per hour, a processor's raw speed is measured in gigahertz, or GHz. This metric dictates the absolute speed at which that processing brain can receive an instruction, execute it, and then immediately move on to the very next one. Let's compare a standard 2.0 GHz processor to a 3.5 GHz processor. A higher clock speed means the CPU executes cycles much faster. That 3.5 GHz chip operates kind of like a sports car versus a standard sedan. It simply covers way more computational ground in the exact same amount of time. Now, 3.5 is a fantastic raw speed, for sure. But it requires some vital context.
Overall computer performance is an ecosystem. A blazing fast CPU will absolutely bottleneck if it's paired with sluggish RAM or a really slow storage drive, so it's a highly synchronized team effort. And that brings us perfectly to Section 4, multi-core, the team effort. Because, let's face it, one core isn't always enough. Modern hardware architecture relies heavily on multi-core teamwork. Imagine a single-core processor as just one single worker handling a massive task sequentially. Even with a super high gigahertz clock speed, they can easily get overwhelmed and bottleneck. Now, a quad-core processor operates like a specialized team of 4 workers. The processor actually divides heavy, complex workloads into smaller threads and assigns them simultaneously across core 1, 2, 3, and 4. This parallel processing creates absolutely massive gains in efficiency. And this specific hardware architecture directly dictates your daily workflow. The powerful combination of high clock speeds and multi-core parallel processing is exactly what means your heavy applications open instantly. It's why your 4K video renders smoothly and why large datasets can be analyzed effortlessly without your whole system lagging. So, we've mapped the journey from raw data to actionable information. And we've looked under the hood to see exactly how clock speeds and multi-core architectures drive that transformation. Now, I have a question for you. Go check your own system settings today. What is your processor's gigahertz speed? And is it single-core or multi-core? Understanding your hardware is the very first step to truly mastering it. Thanks so much for joining me for this Explainers, and I'll catch you in the next one. Hey everyone, welcome to this visual revision guide for Chapter 4. If you've been staring at that 20-question practice quiz, just kind of wondering how on earth you're going to memorize all those terms, well, you're in exactly the right place. Today, we're going to decode that entire quiz together. We're turning a plain list of questions into a cohesive, easy-to-understand masterclass. By the end of this explainer, you won't just know the answers. You'll actually genuinely understand the complete data transformation cycle from start to finish. Let's get right into it. Okay, let's dive in. Here is our study map for this session. First, data and information. Second, the transformation cycle. Third, processing fundamentals. Fourth, CPU cores and speed. And finally, number 5, exam readiness. Knowing where we're going acts like a mini syllabus, right? It lowers your cognitive load and makes absorbing this stuff so much easier. So, Section 1, Data and Information. Before we even think about computers doing all these amazing things, we have to establish the absolute foundational ingredients of computer science. Now, there's a vital contrast you really need to memorize here. Data is, well, it's nothing but raw facts, random numbers, unstructured observations. Basically, it's messy. Information, on the other hand, is data that's been converted into a final, meaningful form. It's kind of like baking. Data is your raw flour and eggs. Information is the cake. Locking this contrast into your memory right now instantly gives you the power to answer the first 2 questions of your practice quiz. If they ask what raw facts and numbers are called, boom, it's data. If they ask what you get after converting that into a meaningful form, you already know. It's always information. Let's actually gamify this for a quick second. Here's a rapid-fire question straight from the quiz. Which of these is a source of data collection? Is it a survey form, a monitor, a speaker, or printer paper? Think about it. If you guessed survey form, you are absolutely correct. A survey form is where we actively gather those raw, messy ingredients, those observations. Things like monitors, speakers, printer paper, those are output devices. They show us the final result, not the raw ingredients. So that efficiently knocks out question 3 on your quiz. Moving right along to Section 2, the data transformation cycle. So now that we actually have our raw survey form data, what happens to it? How does it actually become useful? This brings us to the core of the whole chapter. Memorize this exact 5-step sequence, because it's literally the backbone of the data transformation cycle. Step 1, collect. Step 2, organize. Step 3, process. Step 4, represent. And Step 5, interpret. Understanding this exact flow answers question 20 perfectly, which asks for the correct chronological sequence. But actually, it also helps you sweep through questions 8 and 9. When you're asked for the first step of the cycle, easy. It's collecting. And the final step, the whole thing wraps up with interpreting. And this brilliantly illustrates the crucial difference between steps 2 and 3. Because you might be wondering, what's the actual difference between simply organizing data and actively processing it? Well, organizing is basically just arranging. Like, if you take raw temperature readings and just group them city-wise, you're just organizing. And that gives you the answer to question 4 right there. But processing is active. When you calculate, compare, and really analyze that data, now you're processing it.
Grasping that subtle distinction perfectly conquers question 5 on your exam. Okay, so once the data is processed, we obviously need to show it to humans. And that brings us to step 4, representation. Honestly, bar charts, pie charts, and tables are absolutely the most useful methods for this. They take all those complicated, boring calculations and turn them into a visual format that our human brains can instantly recognize and digest. Keep this visual in your mind because it is the exact answer you're going to need for question 6. Finally, we reach the end of the whole cycle, interpretation. Because, let's be real, what is the point of that beautiful bar chart if we don't actually understand what it means? Information interpretation means looking at a graph and actively making a deduction. For example, looking at it and figuring out which specific area is actually warmer. You're not just staring at bars on a screen, you're extracting actual knowledge. This perfectly defines the final step and practically hands you the correct answer for question 7. Section 3. Computer Processing Fundamentals. Okay, we've totally mastered the theoretical cycle. Now, let's lift the hood of the computer and look at the physical engine driving this entire 5-step transformation. I'm going to keep you on your toes here with another quiz question. Before we get into the technical reality, ask yourself this. Which of these real-world actions is an actual example of computer processing? Is it writing on a piece of paper, cleaning your computer table, changing your mousepad, or maybe loading a web page? Okay, I think you know this one. Of course, the correct answer is loading a web page. The other options are just, physical chores. Loading a web page requires millions of microscopic calculations happening in literally a fraction of a second, which perfectly secures question 11 for you. And who's doing all that heavy lifting? The CPU. The central processing unit is the main brain handling and executing every single one of those instructions. And knowing the CPU's primary role, that easily secures question 10. So the really crucial point here is that while the CPU is the brain, it absolutely doesn't work alone. For a computer to run smoothly, it relies on a balanced team: the CPU, the RAM, and the storage. They all have to work together, like a giant puzzle. If your quiz asks what's important for a computer's overall performance, the answer is hands down all of these. This teamwork concept neatly wraps up question 15 for your review. All right, moving on to section 4, CPU cores and speed. We know what the engine components are now. Let's transition into analyzing exactly how fast and efficiently that processor engine can actually run. Whenever you buy a computer, you always see those letters, right? GZH. This stands for gigahertz, which is the standard unit we use to measure processor speed. Think of it essentially as the heartbeat of your computer. The faster the heartbeat, the faster the computer. Simple as that. So a higher GHz means the processor handles instructions much, much faster. Defining this one core term efficiently sweeps through the answers for questions 12, 13, and 14 all in one go. But hey, speed isn't just about a really fast heartbeat. It's also about having more hands on deck. Processors that have multiple cores inside them are simply called multi-core processors. It's right in the name. A dual-core processor literally means it has 2 cores. A quad-core processor, that means it has 4 cores. Getting these exact specifications memorized is going to clearly and swiftly knock out questions 16, 17, and 18 for you. But why do we even want more cores in the first place? Well, the quiz source puts it perfectly: dividing tasks to complete them faster. Think about it. Imagine you have a massive mountain of homework. If you try to do it all by yourself, it takes hours. But if you divide it up with 3 of your friends, it goes incredibly fast, right? A multi-core processor works the exact same way. It divides the computer's workload across multiple mini-brains so everything finishes quicker. Remembering this analogy completely cements the correct answer for question 19. Finally, section 5, exam readiness. We've journeyed through data, the transformation cycle, processing, and hardware speed. As we transition into our final act here, it's time to grade your mental retention of everything we just covered. Let's see where you stand. Here is the actual grading rubric created by the author of this quiz, Yashab Sarfraz. Now be honest with yourself here. If you can naturally answer 16 or more of these questions correctly from memory, you have an excellent grasp of Chapter 4. Great job. If you're sitting somewhere between 11 and 15 correct answers, you probably just need to quickly revise the specific sections on the data transformation cycle and processor speed. And hey, if you're scoring less than 10, absolutely don't worry. Just rewatch this explainer, maybe with a notebook in hand, and actively jot down these facts. You'll get it. So you've learned exactly how raw data becomes meaningful information, and you've seen how processors use speed and multiple cores to make that magic happen. But remember, theoretical computer science isn't just something you memorize for exams. It's literally happening right in front of you. So I'll leave you with this thought.
based on what you just learned today, how many processor cores are inside the exact device you're using to watch this explainer right now? Is it dual core, quad core? Look it up. See the science right there in your own hands. Thanks so much for watching, and seriously, good luck on your exam.